Get started. Assalamu alaikum everyone. My name is ताबिश मजहर और सबसे पहले बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और you are here today to find out what's important in life to become successful. Or it shows that you are committed to your success and you want to be successful, you want to be a winner in life, and you are willing to put in the hard work to achieve that milestone. So बहुत congratulations already on that you are on that path towards success. I will start with my introduction. Okay. So I am basically a bachelor's in science and computer science from UET Lahore. That was 20 years ago, long time ago. And आप लोगों की तरह मैं भी similar situation में था. I come from a middle class family and my father invested large sum of his savings on my education. So I can understand how much commitment it is from your families to be able to, for you to come here and to study in this prestigious university and how much hard work you're already putting in to become successful in your degrees. So after my BSc, I completed my MSc in Information Systems from University of Leeds. That's in UK. It was a one-year program, and it is a 5-star research rating university in England. In England, the universities are rated in terms of their research ranking from 1 to 5-star. So that's top of the rank. I then completed my MBA from Warwick Business School. That's a few years ago. So after 20 years in a professional career, I decided to do my MBA. And Warwick Business School is one of the top business schools in the world. So I had to go through a rigorous process for the selection, for the admissions, and it was a very tough and competitive degree. लेकिन मैंने इसलिए ये डिग्री कंप्लीट की क्योंकि मैं एज ए पाकिस्तानी चाहता था कि हमें बिजनेस का नॉलेज हो, बिजनेस की एक्यूमेन आए हमारे अंदर. आई कम फ्रॉम वर्किंग क्लास फैमिली. माय फादर इज अ बैंकर and I wanted to learn the business and ins and outs of the business. So all functions of a typical business: marketing, sales, customer services, operations, leadership, organization culture, all of that. So at that point in my career, I thought it would be best agar main MBA karu, taaki I can get equipped for the next phase of my life, which is to become a manager or a senior manager. And so far, alhamdulillah, it's been working out quite well. It's a very knowledgeable course and a degree. Then I also have a 20 years of experience in IT and leadership. I have experience of managing projects over $50 million in size. So that's quite a large size of the project in terms of complexity. It involves hundreds of people. Project duration is over 2 to 3 years, sometimes even 5 years. There are multiple year digital transformation programs. So I've got quite a responsibility in terms of managing these projects in UK and Europe. I also have experience of working and leading over 300 projects in over 15 countries across Europe and US, and over 5 industries, including healthcare, cloud computing, and public sector, banking, retail, manufacturing. So all these industries I have had the privilege to work in. I'm also a certified life and executive coach. And what that means is that at a certain point in my life, I decided that I should give the knowledge and experience I have gained back to my community and back to my people. And उसके लिए मैं चाहता था कि मेरी कुछ training हासिल करूं. Or there is a certification available to become a life coach and an executive coach. And I've been certified. And through that, I found how to motivate human beings,
how to encourage them to be the better version of themselves, how to inspire them towards achieving their goals, and first of all identifying their goals. क्योंकि अगर आपको अपने गोल्स का इल्म नहीं होगा तो आप उनको अचीव ही नहीं कर पाएंगे. सो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू इवन आइडेंटिफाई कि आप चाहते क्या हैं और आपका लाइफ में गोल क्या है. So there is a particular process through which I can help individuals to identifying what their goals are and then putting the steps and motivation to achieve those goals. Okay, so सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है कि in all of us there is something called our inner light. हमारे अंदर की जो रोशनी है, हमारे अंदर का ज़मीर कह लें, हमारे अंदर की स्पिरिट कह लें, जो अल्लाह ताला ने बनाई है. और बहुत सी वजूहात की बिना पर इस पर गर्द जमा हो जाती है, कंफ्यूजन की वजह से, मिक्स्ड एडवाइस की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से, गलत नॉलेज की वजह से, गलत एक्सपोजर की वजह से. और ये गर्द जब हमारे दिलों पर जमा हो जाती है तो इस गर्द का हटाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है और उसके लिए एक सफ़र पे जाना पड़ता है. इट्स कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. और इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए आप ये कोशिश करते हैं कि अपने ऊपर की जो गर्द है उसको साफ करें और अपने अंदर के इंसान को आइडेंटिफाई करें कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहता हूँ. So that process of self-actualization is absolutely important for every individual in their life. I have been through that process. It is a painful process, लेकिन it's absolutely essential. Okay, so मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि what do all religions and all philosophies and coaching have in common? ये जितने भी रिलीजन है दुनिया में और जितनी भी फिलोसफीज हैं इंसान के लिए, जिसमें इस्लाम है हमारा अपना मजहब, और क्रिश्चियनिटी है, ज्यूडिज्म है, बुद्धिज्म है, स्टोइसिज्म, सूफीइज्म है, ये जो जितनी भी फिलोसफीज हैं इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है. और आप शायद ये सोचें कि हाँ इस्लाम हमारा बेहतरीन रिलीजन है जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर ये बाकी फिलोसफीज और रिलीजन्स कहाँ से आए और इनका क्या मकसद है. सो मेरे नज़दीक जितना मेरा इल्म है इन सब का मकसद एक ही है और वो ये है कि इंसान के अंदर की रेजिस्टेंस और उसकी कंफ्यूजन, उसके जो सवाल हैं ज़िंदगी के बारे में, उसकी जो मुश्किलात हैं उनको दूर किया जाए और इंसान की पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जाए. डिफरेंट रिचुअल्स के ज़रिए, डिफरेंट मेडिटेशंस के ज़रिए, एडवाइस के ज़रिए, फेथ के ज़रिए इंसान के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जाए और उसके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जाए. सो तमाम रिलीजन्स जो हैं, तमाम फिलोसफीज हैं, वो इंसानों के लिए आई हैं और वो इंसान से एक ही प्रॉमिस करती हैं, वो ये है कि उसके कॉन्फ्लिक्ट को, इनर कॉन्फ्लिक्ट को, उसके दिल की बेचैनी को दूर किया जाए और उसे कामयाबी और खुशी की तरफ ले जाया जाए. सो जब आप कंपैरेटिव रिलीजन्स का मुताला करेंगे कभी लाइफ में तो आप देखेंगे कि तमाम फिलोसफीज ये करने की कोशिश करती हैं और उनमें से कुछ जो है वो सक्सेसफुल हो पाती हैं, जैसे हमारा रिलीजन है इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन कुछ ऐसी फिलोसफीज हैं जो कि काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, जो टॉक्सिक होती हैं, जो आपको फायदे की बजाय नुकसान की तरफ ले जाती हैं. तो ये मैं अवेयरनेस में आपके लाना चाह रहा था कि जिंदगी में तमाम जो रिलीजन्स और फलसफे हैं ये इंसान की बेहतरी के लिए बज़ाहिर दुनिया में आते हैं. मौलाना रूमी ने कहा था कि ब्रेक योर हार्ट टिल इट ओपन्स. जो अभी मैं कॉन्सेप्ट बयान कर रहा था कि अपने दिल की गर्द को साफ करना, धोना, ये बहुत जरूरी है. क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर का जो इंसान है, जो जो अल्लाह का नूर है आपके दिल में, वो जाहिर नहीं होगा. जो आपके अंदर की सच्चाई है, सिंसेरिटी है, जो सच्ची खुशी है, वो आपको हासिल नहीं होगी. आप इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, आप पैसा भी हासिल कर लेंगे, सक्सेस भी हासिल कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर की जो रोशनी है वो हो सकता है कि इन परसूट ऑफ दैट फॉल्स सक्सेस वो मध्यम हो जाए, वो खत्म हो जाए, आपकी खुशी खत्म हो जाए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू आइडेंटिफाई द इनर यू. और रूमी की बड़ी खूबसूरत बात है कि ही सेइंग कि ये जो जिंदगी में मुश्किल और मसाइल आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, दे ब्रेक योर हार्ट, बट इट्स एक्चुअली थ्रू दैट ब्रेकिंग ऑफ द हार्ट व्हिच ओपन्स यू
to become a more enlightened being. और ये सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंट रिलीजन्स में और डिफरेंट फिलोसफीज में एक्सप्लेन किया गया है. हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास इलामा मोहम्मद इकबाल जैसे फलसफी और विजनरी आए. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग हिम बैक into 2023 and 21st century कि he said that दियारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर. So he's talking about innovation right there. And his poetry is timeless because no matter what time you will read this, innovation never goes old. So he's saying कि नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, if you can learn from the nature or the essence of things, सकूत लाला गुल से कलाम पैदा कर. So you learn to reflect, you learn to think about the nature of things, and then you realize who you are as a human being and as a Muslim. इकबाल ने बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पेश किया जिसे खुद ही कहते हैं. I'm not sure how many of you have actually delved deeper into it. I will strongly encourage you to read more about it because खुदी जो है वो एक ऐसा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जो आपको जिंदगी में बहुत हायर लेवल पे ले जाएगा, बहुत ऊंचे मुकाम पर ले जाएगा. सो इकबाल कहते हैं कि तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए. So once you realize that you hold all the power within you to make any change in life, to become successful, then you can create a revolution on this earth, on this planet. इकबाल ये भी कहते हैं कि खुदी क्या है, तलवार की धार है. So it's a razor edge. It's staying on the edge, always remaining sharp, always being educated, always being competitive. खुदी क्या है राज़े दरोने हयात, खुदी क्या है बेदारी ए कायनात. So it's the awakening of the universe, it's your awakening. खुदी जलवाए बदमस्त व खलवत पसंद. So there's a madness in खुदी, and there is a solace in khudi. There's a moment where you reflect. There is a moment where you follow your passions and your dreams. That's khudi. Staying alive is khudi. इकबाल ने एक जर्मन फिलोसोफर को बड़ी क्लोजली स्टडी किया. His name is फ्राइड्रिक नीचे. और फ्राइड्रिक नीचे ने कॉन्सेप्ट पेश किया द ओवरमैन. बेसिकली ओवरमैन जो है वो खुदी की तरह का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट्स अ फेथलेस कॉन्सेप्ट. एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इंसान के बारे में बयान किया गया है जो अपनी तमाम तर रेजिस्टेंस को, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करता है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लेता है मेंटली, उसका अपने माइंडसेट को, कि जिंदगी में कोई भी चीज उसे इफेक्ट नहीं करती. सो फ्राइड्रिक नीचे सेज द ओवरमैन who has organized the chaos of his passions, given style to his character, and become creative, aware of life's terrors. He affirms life without resentment. So that person who is self-actualized understand the challenges of life, the failures of life, the difficulties of life, the betrayals of life, but they are not affected by it because their mindset is so strong that they understand that in overcoming in these challenges is the freedom, is where the success lies. So they are committed to overcoming their challenges and they enjoy those challenges of life. So self-actualization kya hai? So I got this image, which is basically image of earth and the different layers of earth. And I think this is the same concept which is repeated in everything in the universe. Everything has layers. There is an outer layer or persona, which is beautiful, which is colorful, which has weathers and seasons. But then there are inner cores which has different functions to perform. And finally, at the heart of everything is that energy which drives everything. We can think of it as your DNA. It's that composition which has come through millions of years of existence, which is your uniqueness. You know, you have 37 trillion cells in you. 37 trillion. This is the combination you are. और आपके
आपके अंदर यूनिकनेस जो है वो हर लेवल पे है, आपकी सोच में, आपके अमल में, आपके एग्जिस्टेंस में, आपके फिजिकल अपीयरेंस में, हर चीज में यू आर यूनिक. यू आर नॉट same as the next person. You all bring diversity to this whole culture, to the universe. So appreciate your uniqueness, and your success lies in you maximizing your talents and your uniqueness. And I personally did that, and this is how I achieved success over the past 20 years. I identified what my strengths are. I didn't compare myself to the next person and the next group of people or the next country. I compared myself to myself, and I every day strive to become the better version of myself. That is the only struggle you need to make. You don't compare yourself, don't compete with anybody else. Compete with yourself always. I hope I've made it clear. Okay, so I will also ask you to think about who your heroes are in life. आपके role models कौन है? Are they a visionary leader जिन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, अपनी कौम को के लिए जेल और सऊकतें काटी और अपनी कौम को कामयाबी की तरफ ले जाने की कोशिश की? या कोई स्पोर्ट्स पर्सन जिसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्स कंपेटिटिव स्पिरिट पे तवज्जो दी और सक्सेस अचीव की? या ए philanthropist, ए सोशल वर्कर? या आपका रोल मॉडल इज अ बिलियनियर और एन इनोवेटर लाइक इलोन मस्क? हो सकता है आपका रोल मॉडल कोई साइंटिस्ट हो जिसने पूरी दुनिया को अपनी इन्वेंशन से हैरान कर दिया? या स्टीव जॉब्स की तरह का कोई इंसान हो जिसकी बनाई हुई चीजें आज दुनिया की 25% आबादी के हाथ में है, यूजिंग आईफोन्स और एयरपॉड्स? Or you want to become an athlete, a strong athlete, and achieve in that domain, you must have a role model. और अगर आपके role model नहीं है, so that basically shows the failure of our society. कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से रोल मॉडल्स डिमिनिश हुए हैं और आने वाली जनरेशन के रोल मॉडल्स नहीं है, क्योंकि रोल मॉडल्स गिव यू एन एक्चुअल एग्जांपल ऑफ हु टू फॉलो इन लाइफ एंड हु टू बिकम लाइक. हो सकता है कि ये लोग मशहूर लोग हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो रोल मॉडल आपके फैमिली, आपके इर्द गिर्द हो, आपके टीचर्स की सूरत में, आपकी फैमिली की सूरत में. फॉर एग्जाम्पल, माई रोल मॉडल, माई हीरो was my father. Well, is my father, but he's passed away last year. Why is he my role model? Because he's an individual who strived for his family. He worked the same job as a banker for 30 years, 9 to 5, and he funded our education. As a result, I'm sitting here as a successful and self-actualized human being. He he used to take us outside Government College Lahore, and he used to tell us, this is going to be your college, when we were in school. And then he encouraged us to come to UET. And then he sent us to abroad to study a master's degree. And he always encouraged us to go further beyond of our capabilities. He was my coach. He was my motivator. I remember when I took admission in my MBA at the age of 40. Everybody said, why are you doing MBA right now? Why are you spending so much money? आप वो पैसा सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए, तो why do you want to do it now? But he was the only person who said, keep learning, keep growing. Even though he was doing the same job for 30 years, he had a vision for his children. And that is why he's my hero. Because this is what I want to do for my children. I want to inspire them to be greater than themselves all the time. Do not stop at mediocrity. Do not stop at being less than you can be. The only purpose of life is to maximize your potential and passions. Okay. So ये ठीक है कि आपके रोल मॉडल हैं और वो लोग बहुत सक्सेसफुल रहे हैं जिंदगी की खास डोमेन में. जिंदगी सिर्फ देखें, जिंदगी यूनी डायरेक्शनल नहीं है, यूनी डायमेंशनल नहीं है. जिंदगी में आपकी हेल्थ भी है, आपकी फैमिली भी है, आपको उन्हें भी टाइम देना है, आपका सोशल सर्कल है जिसमें आपके फ्रेंड्स हैं, आपके इन लॉज हैं, आप कुछ पब्लिक सर्विस भी करना चाहते हैं,
आप फन और एडवेंचर भी चाहते हैं लाइफ के अंदर, आप चाहते हैं कि आप रिच भी हो, आपके पास पैसा भी हो, आप अपनी ग्रोथ पे भी काम करना चाहते हैं, और आप कैरियर ओरिएंटेड भी हो सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ लाइफ. लाइफ इज नेवर यूनी डायमेंशनल, याद रखिएगा. और होता यह है कि जब आप एक खास डायमेंशन में अपने लेवल को अप करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी और लेवल से किसी और डायमेंशन में आपका लेवल कम होना शुरू हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु आर टू कैरियर ओरिएंटेड, their families tend to struggle because they can't take out that time to give their families. So I'm just making you aware कि जिंदगी में सक्सेस सिर्फ एक चीज का नाम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, रॉजर फेडरर, ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एथलीट, लेकिन हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी की बाकी डायमेंशंस में कामयाब ना हो. मदर टेरेसा, शी नेवर मैरिड, so she never had a family life. Elon Musk, he's a billionaire, but he had issues of depression in his life and lack of family life. Steve Jobs, same issues. Muhammad Ali, he had challenges in his life related to different dimensions. My father, excellent family person, but he had his own challenges in other parts of life. He couldn't achieve financial success to the level he could if he wouldn't invest on us. If he would have invested in something else, we were his investment. So I'm making you aware कि अपनी लाइफ, अपने जहन को ब्रॉड करें, और इस बात का तयन करें कि आप किस चीज में, किस डायमेंशन में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं. और ये याद रखिए कि हर सक्सेस की एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट को पे करने के लिए तैयार रहें. और हो सकता है कि आप जब फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लें, तो आप बाकी शोबों में भी टाइम स्पेंड करें और अपने लेवल को रेज करें. सो ट्राई टू रेज योर लेवल कॉन्स्टेंटली इन लाइफ इन दीज डायमेंशंस. और अगर कोई चीज इग्नोर हो रही है, तो एटलीस्ट इस चीज को एक्नॉलेज करें कि वो किस वजह से इग्नोर हो रही है. ठीक है? ओके. एक और कॉन्सेप्ट बिफोर आई गेट टू द 10 रूल्स इज आउटर एंड इनर ग्रोथ. सो आई पर्सनली डोंट थिंक वी आर एनी डिफरेंट टू एनी अदर बीइंग ऑन दिस प्लैनेट. इंसान समझते हैं कि हम बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं और बहुत कामयाब हैं. आई डोंट थिंक वी आर एनी डिफरेंट टू ए प्लांट और ए ट्री or an animal. The only thing we have different is our mind and uh, intellectual ability and the power which Allah has bestowed upon us. जो जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है. These are the things which makes us different. Physically, genetically, we are not much different. For example, if you think of a tree, it starts from a seed and then it goes through different stages of growth, both outer growth outside the earth and inner growth in terms of its roots and how the roots spread under the earth, extracting the nutrition from the earth and then helping the tree to grow. And finally, the tree reaches a stage where it gives its fruit to the world. So that's a very important stage as well. And different philosophies in life talk about these stages. These stages can be 0 to 5 years old, 5 to 10 years old, 10 to 20 years old, 20 to 35 years old, and 35 to 60 years old, and then 60 plus. So there are different stages in life. They come in different chapters in life. और जिंदगी के हर चैप्टर की अलग नीड्स, अलग डिमांड्स हैं. और आप एक ही फलसफे को लेकर सारी जिंदगी नहीं गुजार सकते. इट्स इम्पॉसिबल. बिकॉज आप फिजिकली चेंज हो रहे हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपका एनवायरमेंट चेंज हो रहा है. सो बी रेडी फॉर चेंज. जिंदगी के इनिशियल स्टेजेस में आपको सपोर्ट करते हैं आपके पेरेंट्स, मोस्ट लाइकली. लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर पाते. ऐसे लोग अपने टीचर्स, अपने एनवायरनमेंट की तरफ देखते हैं, और जिंदगी के जिस स्टेज में आप हैं, आप अपने टीचर्स को रोल मॉडल समझते हैं, या उनसे इल्म हासिल करना चाहते हैं, या उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं. फिर एक स्टेज आती है कि आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. यू विल फिनिश योर एजुकेशन, यू विल गो टू द आउटर वर्ल्ड, and you will be on your own. You will be expected to do good hard work at your careers and achieve great things and spend money on your family and have a family and have children, inshallah. So all of these things people will be expecting of you as an adult. लेकिन याद रखिएगा कि जिंदगी में डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आपको,
और उन चैलेंजेस से अगर आप पॉजिटिवली हिम्मत के साथ गुजरते हैं और सही फैसले करते हैं, then you will reach a stage where I am at and your senior teachers are at, which is called an age of enlightenment or self-actualization. We are over 40 years old और genetically आपके अंदर ऐसी चेंजेस होती हैं जो कि आप यू कैन फील इट कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज नाउ कंप्लीट एंड आई एम रेडी टू पास ऑन माई नॉलेज and my gift to the world. So that stage of life where I am at, I have decided to become a coach. And it's called an age of superego by psychologists. और ये ऐसी फेज है जिसमें मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जब आप आज से 20 साल बाद इस स्टेज पर पहुंचे, तो जिस तरह मैं अपना नॉलेज पास ऑन कर रहा हूं, इस तरह आप अपना नॉलेज भी कम्युनिटी में, अपनी फैमिलीज में, अपने अपने लोगों में पास ऑन करें बगैर किसी रिवॉर्ड के. It will give you the highest level of satisfaction, even more than making money. I promise you that. It's called philanthropy. It's called social work. It's called passing uh, your wisdom to the next generation. और ये चीजें बहुत जरूरी हैं. It will give you a lot of satisfaction. So जैसे कि मैंने कहा, there are two types of growth. One is the outer growth जो दुनिया देख सकती है, and one is the inner growth जो कोई नहीं देख सकता, जिससे सिर्फ आपको गुजरना है. वो सिर्फ आप जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, बल्कि बाज़ औक़ात आप भी नहीं जानते. उसके लिए आपको दीन से लगाव जरूरी है, फलसफे पढ़ने की जरूरत है, जैसे स्टोइसिज्म है, सूफीज्म है, और डिफरेंट फिलोसफीज इन लाइफ विल हेल्प यू टू नेविगेट थ्रू लाइफ एंड डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ लाइफ. क्योंकि जिंदगी में कभी सक्सेस है, कभी लॉस है, कभी फेलियर है, एंड दीज डिफरेंट फिलोसफीज हेल्प यू नेविगेट थ्रू लाइफ. I hope I was able to make this process topic clear. So, okay, so let's dive into the 10 rules of success जिसके लिए आप यहाँ पर हैं. So, पहला rule, choose a profession that is right for you. I'm not saying choose a right profession. I'm saying choose a profession that is right for you. अपने लिए ऐसा profession choose करें जो आपके लिए मुनासिब हो. किस तरह? सबसे पहले जिंदगी में अपना मकसद तलाश करें. मकसद क्या चीज है? मकसद आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो सकता है एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ. एज ए स्टूडेंट आपका मकसद ये हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने जो आप पे इन्वेस्टमेंट की है, आप हाईएस्ट ग्रेड्स के साथ अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करें. दैट इज योर पर्पस इफ देयर इज नो अदर डिस्ट्रैक्शन. लेकिन हो सकता है कि खुदा न खास्ता आपके जो पेरेंट्स हैं वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट ना कर पाए, तो आपको सेल्फ फाइनेंस करना पड़े, आपको खुद जॉब करनी पड़े. सो योर पर्पस इज टू सर्वाइव. That is your highest priority. So you have to focus on that, on survival. So your purpose is usually your highest priority in life. जब आप वो purpose achieve कर लेते हैं, जब आप financially stable हो जाते हैं, तो आपका purpose change हो सकता है. ठीक है? लेकिन there is always one purpose in life. एक और तरीका ये है कि आपको अल्लाह ताला ने यूनिक टैलेंट्स दिए हैं, आप उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें. आप अपनी जिंदगी में अपने पैशंस को एक्सप्लोर करें. हो सकता है कि आपको यू आर एन एस्थेटिक्स पर्सन, आपको कायनात की खूबसूरती पसंद है, यू वांट टू बी अ फोटोग्राफर, और यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन एज ए हॉबीस्ट, और यू वांट टू बी एन आर्टिस्ट, or you want to have be an adventurer or a holiday planner. So it could be anything, but try to find your passions and then get formal training on them. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि the difference between your passion being your hobby and being your career is training. जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग हासिल करेंगे उस चीज के ऊपर, then you will be able to pursue that passion as a career. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ये कोशिश करें कि आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज इन डिमांड. आपके इर्द गिर्द के माहौल में कौन सा ऐसा कैरियर है, कौन सी ऐसी चीज है जो डिमांड में है, लोगों को जिसकी जरूरत है, विच इज ट्रेंडिंग. क्योंकि योर बेस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस आर दैट यू कंबाइन योर पर्पस, विच इज योर हाईएस्ट प्रायोरिटी, योर पैशन, जिस पे naturally you are inclined and life has given you the energy to naturally be attracted towards that passion. And number 3, which is also in demand. Because if you are able to combine all these 3 things, then you are
in a bliss. You cannot make any wrong moves. Basically, you will not be working. You'll be having fun, but at the same time, you'll be making good money because that's your career as well. So try to find an area which is aligned with your passion, your purpose, and also it's in demand. A lot of people make a mistake that they either do something which is not their passion in life, or they work in a career which is not in demand. And then they think, why are we not successful? So there is a reason why they are not successful. So correct those things, align those things, and then you will go towards success. I guarantee you that. Rule number 2, or step number 2, achieve mastery. Now you have chosen your career, your profession. Now it's up to you to become a master at it. Work hard at it. Now you have no excuse. You have found your purpose, passion, something which is in demand. All you have to do is to work hard. If you can't work hard, then you cannot blame anyone for your misfortunes but yourself. So hard work करना, smart work करना आप पे depend करता है. How? You can become certified in that. You can get formal education at that profession. You can remove the distractions. अपने दिन के 24 घंटों में आप देखें कि कितना वर्क कितना टाइम आप डिफरेंट एक्टिविटीज को दे रहे हैं. हो सकता है you are spending too much time on social media. These are distractions in that case. If it's not your purpose, if it's not your career, then it's a distraction. So remove the distraction, because जब आप वो टाइम फ्री करेंगे तब वो टाइम आप किसी ऐसी चीज को दे सकते हैं which is going to make you successful. Focus on learning. Don't stop learning. I'm 42. I haven't stopped learning. I want to do another degree. I want to keep learning, and I want to keep passing on the knowledge. So I have discovered this is the reason to success. This is the secret to success. You have to keep learning, keep adapting to the changing environment of the world. So I will strongly suggest you to keep learning. Do it by yourself. खुद कोशिश करें किसी चीज को करने की. आपके टीचर्स आपको सिखाते हैं, but then go home, develop it by yourself, experience it by yourself. जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे किसी चीज को, तब तक वो चीज आपके अंदर इन्फ्यूज नहीं होगी. Your body will not, it will not become part of your DNA. So between learning which is in your mind and your muscle memory, जो कि हमारा मसल्स रिमेंबर करते हैं, it's the experience. So जब कोई काम आप हाथ से करते हैं, जब कोई काम आप फोकस से करते हैं, तो वो चीज इन्फ्यूज होती है. So do it by yourself. And finally, जो लोग आप में से फील करते हैं कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है या वो शाय हैं, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि गेन एक्सपोजर. अपने आप को डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशन से, लोगों से आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करें, ताकि आप उन सिचुएशंस में, शुरू में आप परेशान होंगे, बहुत सारे लोगों को देखकर आप घबराएंगे, या हो सकता है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सेंट ठीक ना हो, तो हो सकता है कि आप ऑकवर्ड फील करें, एम्बैरस फील करें. बी कंफर्टेबल इन दैट. Be comfortable in being uncomfortable. Understand that this is a learning process. It's absolutely fine to be embarrassed in front of people. There's nothing wrong with it. If you're sincere, if you want to learn, that's no problem. Keep learning. Expose yourself, fail, but fail fast. इतना चीज को मत प्लान करें कि जब आप उसको एग्जीक्यूट करें तो वो आउटडेटेड हो चुकी हो. The idea to success is you have to try fast. If you want to be an innovator, you have to go to the market early. You have to fail. Then you can learn, and then you can improve. Nothing comes at V1 of a software product. Everything starts from V.1 and then 0.2 and 0.3 and so on. So there are bugs. You fix those bugs, and then you become a really good product. Okay. Step number 3, solve problems. You're no good to anyone if you're not solving problems, your problems and others' problems. The amount of money you make in the world is equal to the number of problems you solve for the number of people. Steve Jobs invented smartphone. Why? Because it was solving a great number of problems for a great number of people.
And that's how he became successful. What is Elon Musk doing? He's creating an electric car, which will solve a problem for a lot of people. So solve problems, and the bigger problems you solve for more number of people, more successful you become. This is a secret to success. If you don't know what problems to solve, ask your target consumers. Just ask them in a survey or face to face. Go to the markets where they operate. Ask them face to face. आपके क्या challenges हैं? आपके क्या problems हैं? And then think of ways to filling those gaps. Problem solving skills सीखें. Okay, how to solve the problems, how to categorize problems. And in most cases, use a tool. Do not reinvent the wheel. Do not waste your time reinventing the wheel. See if there is already a tool out there which can solve the problem. अपने गोल जिंदगी में गोल्स सेट करें, लेकिन गोल्स इतने कॉम्प्लेक्स, इतने बड़े ना हो कि आप परेशान हो जाए कि मैं कैसे अचीव करूंगा. छोटे गोल्स सेट करें. दे आर कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल, आपका आज का गोल ये है कि मैं एक एक्स्ट्रा चैप्टर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट करूंगा, एंड देन आई विल क्रिएट अ शॉर्ट प्रोग्राम. दिस इज योर गोल फॉर टुडे. व्हेन यू कंप्लीट दैट गोल, बिकम हैप्पी. अपने आप से खुश हो, अपने आप को दाद दें कि आज का मैंने गोल कंप्लीट कर लिया. टुमारो सेट अनदर गोल. Go further. Set goals which last for a day or couple of days or a week initially. Do not set goals that I want to become a millionaire and then you don't know where to start. So set small goals. Make sure to celebrate. मैंने ये गलती की कि जिंदगी में बहुत सी achievements पे I didn't celebrate. And it got me depressed after a while. कि what am I achieving things for? मैं जिंदगी में कामयाबी किस लिए हासिल कर रहा हूँ? So the secret to remaining happy in life is to celebrate from time to time. Allow yourself to celebrate. अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना सीखें. And these things will increase your confidence. जब कॉन्फिडेंस क्या है? कॉन्फिडेंस ये है कि हम एक रिस्क लेते हैं, and when we become successful at that risk, we feel confident. If we fail at that risk, we become less confident. So it's a constant struggle in life. The more risks we take, actions we take, the more we achieve those actions, more confident we become. So this is an iterative process. Step 4, network with people. No man or woman is a silo. You are not an island. आप अकेले नहीं रह सकते सारी जिंदगी. You have to network with people. लोगों से बात करें, लोगों के interests के बारे में जानें, अपने टीचर्स से बात करें, अपने फेलो स्टूडेंट्स से बात करें, अपने घर वालों से बात करें, उनके इंटरेस्ट के बारे में जानें, अपने नॉलेज को शेयर करें. बी हेल्पफुल. क्योंकि इससे ये होगा कि जब आप अपने नॉलेज को शेयर करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आपको सिंसियर समझेंगे, जिससे लोग आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे अपनी बात शेयर करेंगे. आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वो भी आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे. हो सकता है उनके पास आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो. सो बी एन ओपन पर्सन. ठीक, मिसट्रस्ट मत करें लोगों को ज्यादा. अगर कोई गलती करता है, कोई आपका ट्रस्ट ब्रेक करता है, तो इट्स देयर फॉल्ट, इट्स देयर लॉस. दे हैव लॉस्ट एन सिंसियर पर्सन इन देयर लाइफ. Do not let your inner light be diminished as a result of it. Do not lose your insincerity. Become presentable and confident. अच्छी ड्रेसिंग करें. Look after yourself. The way you look makes people have an opinion about you. I'm not talking about buying expensive things. I'm talking about being clean and presentable and sharp. Make a brand of yourself. ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज जिनको आप फॉलो करते हैं या लोग फॉलो करते हैं, कभी सोचा है कि क्यों करते हैं? क्या उनकी प्रोडक्ट वाकई इस लेवल की और वैल्यू की होती है कि लोग उनके डाई हार्ड फैंस बन जाएं और उनके स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी की कितारें लगा दें? It's not because of that. It's because of marketing. It's because of brand management. So what can you do to turn yourself into a brand? What am I doing, for example? I'm being a coach. I'm helping people. I'm passing on my knowledge. I'm being an individual and I'm making a brand out of myself. What did Qaid-e-Azam do? He created a brand of himself. What did Allama Iqbal do?
He created a brand of himself. He presented khudi. So you have to constantly find ways to be an individual, to stand out from the crowd, to make your voice heard. Do not assume कि कोई आपका हाथ पकड़ के खींचेगा और कहेगा कि आओ, you are amazing. Don't be deluded. It's a very competitive world with 14 billion people or so in there. You need to stand out from the crowd by yourself through your own hard work. Nobody is going to pull you out. Trust me. Appreciate the feedback. Because you are improving, अगर कोई feedback आपको देता है और अगर नहीं देता तो ask them for a feedback. अगर वो feedback आपको लगता है कि वो जायज है, make that change in you. अगर वो लगता है कि वो feedback तनकीद है, judgment है, criticism है, learn to ignore it. Do not let it sink in. Do not be negative. अगर आपको लगता है वो feedback advice है, sincere advice है, then think about it. And if you think it's right, act on it. Change yourself. Step number 5. Improve communication skills. I'm going to go quickly now, conscious of time. We started late. So improve your communication skills. जब भी आप किसी से बात करें, be clear, concise and thorough. जब बात करें तो उसकी बैक पे डेटा हो, एविडेंस हो, सिर्फ जज्बात और एहसासात ही ना हो. क्योंकि जब आप प्रोफेशनल दुनिया में आते हैं तो पीपल वांट टू गेट फैक्ट्स एंड फैक्ट्स आर बैक्ड बाय डेटा. अप्लाई फिल्टर ऑफ एम्पैथी. स्ट्रेट फॉरवर्ड रूड होने का नाम नहीं है कि आप लोगों के जज्बात का ख्याल ना रखें. बी एम्पैथेटिक. अपनी आवाज में सॉफ्टनेस पैदा करें, लोगों के जज्बात को समझने की कोशिश करें. डोंट बी अ हार्ड शेल, बी एन ओपन पर्सन एंड यूज ह्यूमर ऑफ्टनली. इसमें करिश्मा है, इसमें एक अट्रैक्टिवनेस है. ह्यूमर यूज करें, अपने आप को प्लेजेंट इंसान रखें ताकि लोग आपसे बात करना पसंद करें. स्टेप नंबर 6. जिंदगी की एक स्टेज में यू विल टर्न टुवर्ड्स बीइंग अ लीडर, ए टीम लीडर और ए मैनेजर, एंड यू नीड टू लर्न लीडरशिप स्किल्स. लीडर क्या होता है कि वो करता है विच इज राइट, और लीडर स्टेटस को चैलेंज करता है, status quo which is not working. So the leader challenges it in their environment and then tries to make that change for the new reality, to make a new reality. So that's what a leader does. So if you're working in a software house, if there are certain things which are not working, have leadership courage to identify those issues and then make suggestions, make an effort to change them towards positivity. This is how I did my career, went through my career. This is what gave me success. Find the gap and fill it. Again, find problems and solve them. Show others path to success. As a leader, give credit first. If you are a leader of a team or of your family, give credit first. Don't take the credit. Give the credit to your team. But if your team fails, take the blame first, because you are the leader. You are responsible for their failure. It was your responsibility to keep them on track. So learn this fact and don't think it will hurt your ego. Actually, it will make people respect you. They will think you are a leader who takes the blame for their team, who takes the fall, but who gives the credit to their team. They will respect you more. Your team will respect you more. Always be ready for positive change and find opportunities in it. Whatever negative is thrown at you in life, जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, उसके पॉजिटिव साइड को देखें. Like I said, life is trying to break your shell, and you are constantly, you need to identify who you are and be a stronger version of yourself. Have a stronger mindset to overcome those challenges. Number 7, पैसे की इज्जत करें. पैसे का लालच मत करें, पैसे की इज्जत करें. What do I mean by that? Understand how the world works. दुनिया में मुल्कों के ताल्लुकात आपस में कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किन रिसोर्सेज की वजह से होते हैं. Why does America and other countries want to do trade with India? What kind of resources they have which we don't? And why wars are waged? For which resources?
It seems it's for religions, but it's really not. It's about resources. So understand how the world works. Ask for a fair wage. अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको उसका सिला सही नहीं मिल रहा, so have the courage to ask for a fair wage, regardless of the consequences. क्योंकि अगर आप टैलेंटेड हैं वाकई में, तो आप कहीं और भी जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं, then you will have to work harder. Your boss will tell you you have to work harder and it will improve you. So have a think. Am I being paid fairly for the work I'm putting in? And be honest with yourself. अगर आपको बोनस मिलता है, अप्रिशिएट करें, मजीद एफर्ट करें और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। ग्रीडी मत हो, गलत काम मत करें, क्योंकि इनिशियली आपको सक्सेस मिल जाएगी, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन वो पैसा आपको जिंदगी की बाकी डायमेंशंस, जैसे मैंने आपको बताया, सिंसेरिटी, फैमिली, फेथ, इन चीज़ों से दूर ले जाएगा, जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसानदेह है। और सबसे बड़ा सीक्रेट ये है पैसे की इज्जत करने का कि स्पेंड लेस, कम खर्च करें और इन्वेस्ट ज़्यादा करें। पैसा ग्रो तभी करता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। और जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने की कोशिश करें, बिकॉज व्हेन यू आर फाइनेंशियली फ्री, व्हेन यू हैव एनफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन pursue your passions, you can do good work, you can do public service. Step number 8, take risks. जैसे मैंने पहले कहा, find comfort in being uncomfortable. Innovate and experiment, नई चीजें ट्राई करें। जिंदगी में बैकअप प्लान रखें, एक्स्ट्रा सेविंग्स अपने लिए रखें किसी जगह पर। बिग रिस्क्स और बिग रिवॉर्ड्स, जिंदगी में बाज़ औक़ात रिस्क लेने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात जितना बड़ा रिस्क हो उतना ही रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है, लेकिन थिंक थ्रू दैट रिस्क। ब्लाइंड रिस्क मत ले, प्रोज एंड कॉन्स का ख्याल रखें, और अगर आपके पास बैकअप है देन यू कैन टेक बिगर रिस्क। नंबर 9, टेक केयर ऑफ योर वेलबींग। आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो अपनी वेलबींग का ख्याल रखें। जिंदगी सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, जिंदगी में आपकी सेहत भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, यू आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एनर्जीज, योर मेंटल एनर्जी, योर स्पिरिचुअल एनर्जी एंड योर फिजिकल एनर्जी। सो यू आर ए बैलेंस ऑफ दीज 3 थिंग्स। इन तीनों चीजों को बैलेंस रखना सीखें। साफ सुथरा खाएं, फ्रेश खाएं, मेडिटेट करें, नमाज इज अ मेडिटेशन, वॉक, मॉर्निंग वॉक इज अ मेडिटेशन, एक्सरसाइज करें and play sports. Once you get into your career, once you start working 9 to 5s, then you will lose touch with your physical exercise. So a lot of adults get into that problem. So what I do is I work out 3 times a week. I go for a run to keep in shape, to keep active, and I will suggest you guys do the same. Know your values. Number 10. Values क्या चीज़ है? वैल्यूज वो चीजें जो हमें हमारे माँ बाप ने दी, हमारे मजहब ने हमें दी। वो जिंदगी के गोल्डन असूल हैं, इमोशंस हैं, जिनकी वजह से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। फेथ, ईमान सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। स्टे हम्बल। ईमान, फेथ इज समथिंग कॉल्ड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि आप हर चीज का सिला फौरन नहीं चाह रहे, आप मेहनत करते हैं और सिला बाद में डिमांड करते हैं, या बाज़ औक़ात आप बगैर किसी सिले के भी काम करते हैं। सो फेथ इज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। There are some core values to being a good human and successful human. That's integrity. What you say is what you do. Honesty and sincerity. हर एक से सिंसेयर होके मिले, हर मोमेंट के साथ सिंसेयर रहें। जैसे इस वक्त मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी तमाम तर तवज्जो, मेरे तमाम तर जो पैशन है वो ये है कि मैं अपना नॉलेज आप तक ट्रांसफर कर सकूं। आई एम बीइंग सिंसियर इन दिस मोमेंट, एंड सिंसियरिटी will have a positive effect. It can never have a negative effect. Courage. Have the courage to say the right thing and respect others and others' opinions. Read philosophies. Grow yourself as a person. Read different philosophies, comparative religions or Stoicism or Sufism. Read different philosophies. I actually discovered the root of Islam, the core of Islam, after studying other religions as well.
So from birth, I was taught being a Muslim, alhamdulillah, and I prayed. लेकिन सही तौर पे मैं इस्लाम की रूह को तब समझा जब मैंने बाकी रिलीजन्स को स्टडी किया, जब मैंने डिफरेंट फिलोसफीज को स्टडी किया, तब मुझे इल्म हुआ कि इस्लाम का हर रिचुअल, हर अमल किस वजह से है और कैसे वो बाकी रिलीजन से बेहतर है। तो ये चीजें आपको नॉलेजेबल होने से पता चलेंगी। कीप डिस्कवरिंग योर सेल्फ, कीप गोइंग ऑन एडवेंचर्स ऑन हॉलीडेज, लिव योर ट्रुथ। एक ट्रुथ होता है जो सबका ट्रुथ होता है। एक आजकल हमारे माशरे में वैसे भी जहां झूठ आम है, अपने सच को कहना सीखें जो आपके दिल में है, क्योंकि जब आप अपना सच किसी से कहेंगे तो या तो दूसरा इंसान अपना बिहेवियर चेंज करेगा या आपको एहसास होगा कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे। दोनों सूरतों में सिचुएशन आगे मूव होगी। अपने सच को एम्पैथेटिकली कहना सीखें। These are now, let's go to the summary of what we discussed. Step one, choose a profession that is right for you, which is a combination of your passion, your purpose, and what's in demand. Achieve mastery at that profession. Solve problems for others. Network with people, connect with people. Improve your communication skills. Develop leadership skills. Learn to respect money. Take calculated risks. Take care of your well-being. And finally, know and keep rediscovering your values. Finally, कुछ चीजें हैं कि achieve in life, inspire your next generation, like I inspire my son. Explore the world. It's a beautiful world out there. Whenever you get the opportunity, Pakistan is a beautiful country. Go to the northern areas, go to the south, explore your country. You will learn a lot. You really learn life from traveling. There is no doubt about that. And finally, have fun. It doesn't matter what your age is. I'm 42, but I have fun. I have the inner child in me alive. Keep the inner child in you alive. Why? Because an inner child remains curious about learning new things, about discovering new things. They remain excited about meeting new people. So keep the inner child alive. Don't be childish, but keep the inner child alive. Thank you very much once again for your time. आपने वक्त निकाला मेरे लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, अपनी जिंदगी का 1 घंटा मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप यू फाउंड इट यूजफुल, और इफ यू डिड, please add me on LinkedIn and visit my website. If you have any confusion, if you want any direction, post me a message on any of these channels. I'm starting a YouTube channel as well to keep inspiring the younger generation. You can subscribe to it, and the QR codes are on the screen. And I wish you all the continued success in your studies, and take care. आपको अपनी आवाज आ रही है? जी दानिश, बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया सर, वेरी गुड टॉक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऑडियंस से कोई क्वेश्चन करना चाहता है। जी जी, श्योर। सर एक क्वेश्चन है सर, मैं किया। I cannot hear you very clearly, so try to speak closer to the mic or type in the question in WhatsApp or in the chat. जी वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान में रहते हुए हम बहुत देखते हैं यूथ में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है काम करने का, बट जितना कि वहाँ पे गवर्नमेंट हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील करते हैं इस तरह का। तो इस बारे में इसके बारे में
अच्छा, मुझे जहां तक आपका सवाल समझ में आया, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में यूथ पे प्रेशर्स बहुत हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। एम आई राइट? जैसे वो अपॉर्चुनिटीज के ना होने की वजह से जो है रिस्क लेने की कैपेबिलिटी जो है हम सबको बहुत कम है। जो चीज हम नोटिस करते हैं मोस्टली होता है एक मेहनत बच्चे करते हैं वो काम तो कर लेते हैं बट वही होता है कि हम इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आई एम सॉरी आई कुडंट हियर यू वेरी वेल बट आई विल से a few words about it. और फिर आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। मीनवाइल दानिश, कैन यू प्लीज टाइप इन द क्वेश्चन इन द चैट एज वेल। सो इसका मेरे मेरे जैसे मैंने कहा कि हर प्रॉब्लम में आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। सो पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त क्या है? पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त ये है कि यूथ अनइंस्पायर्ड है, यूथ के रोल मॉडल्स नहीं है और डायरेक्शन नहीं है। और पीपल आर वर्किंग एंड वर्किंग हार्ड, बट देर इज नो विजन फॉर द कंट्री, देर इज नो विजन फॉर इंडिविजुअल्स, और देर आर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसमें मैं अपॉर्चुनिटी ये देखता हूं कि रिसेंटली मैंने लिंक्डइन पे देखा कि पाकिस्तान इज प्रोबेबली गोइंग टू बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग freelancer community on Upwork, through Fiverr, through different startups. और आपको जान के खुशी होगी कि I myself am starting a new startup in UK, and I'm looking for individuals and train individuals in Pakistan. And a lot of people in other parts of the country world are doing the same thing. We constantly want developers, we want IT experts, who are intelligent, who are educated from good universities like UET and NUST and FAST, and we want workforce, intelligent workforce. देखें, अगर मैं पाकिस्तान से हूं और मैं पाकिस्तान से आकर पूरी दुनिया को लीड कर सकता हूं और मैं इस लेवल पे ऑपरेट कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू इज द अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी जो है मेरे ख्याल के मुताबिक आपको मुल्क के अंदर से देखनी नहीं चाहिए, आपको मुल्क के बाहर से देखनी चाहिए कि जहां डिमांड है। डिमांड इस वक्त है यूरोप में, डिमांड है यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स, इट्स गोइंग टू बी decades and generations of startups. Or you need to polish your skills as an individual, make your brand, be visible. Nobody is going to know that you are a great developer if you are not visible on Upwork, you're not visible on Fiverr, you don't have a profile on LinkedIn, you don't have a website. Nobody is going to know about the great work you are doing. So be visible. अपने अपने ब्रांड को बिल्ड करें। तो वंस यू विल बिल्ड योर ब्रांड, तो कभी आपको डिफरेंट साइट से काम आएगा, कभी आपको लोकल प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो यू नो, जस्ट डोंट depend on your career or your employer. Build a brand of yourself outside your career as well. I hope it answers your question. और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए हो तो आई विल regularly schedule. This is a motivational talk, but I can also schedule seminars on webinars on cloud computing and solution architecture and projects in different industries to make you guys give you an exposure of how things are done in the world. So I will do it through my channel, and I will share the links with your respective teachers, and then you guys can join in. Any other question? Sorry, I can't hear you very well. Please type the question in the chat as well, or bring the mic closer. Okay, time management and staying motivated. So this is a tip from the way I work. Every day, do something productive, whatever is productive to you. So one day a week, I take it for fun, recreational activities and spending time with the family. That's every Sunday. इसके अलावा जो हफ्ते के 6 दिन है, I'm constantly learning something new. I'm discovering something new about a new industry, about a new software, about setting up my own business in the future, all these things. And regardless of whether it's going to happen or not, so this is very important, regardless of the reward, you have to invest in you.
You have to keep pushing those boundaries. You have to keep growing. So growth is very important. So अपनी फिजिक देखें, फिजिकल ग्रोथ जो है ना, एक्सरसाइज वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, और वो एनर्जी आपके ब्रेन को फ्यूल करती है। जब आप हेल्दी और साफ सुथरा खाना नहीं खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, सो योर ब्रेन विल फील लेजी, it will procrastinate. So these things are connected. So make sure you exercise, make sure you eat clean, eat healthy, और साथ ही साथ रोज अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, learning to speak better and more clear and concise English, or to communicate with the world, or learning a new philosophy, or learning about history. Just keep learning. That's the only trick. लोग कहते हैं टाइम नहीं होता, बहुत टाइम होता है। Honestly, in the past 20 years, I remember when I was your age, I was not really curious about history and philosophies of life, क्योंकि मैंने उस तरह के challenges face नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही मैं practical life में enter हुआ, then these things hit me, because you are on your own. Your friends are gone into different careers, and then you have to survive on your own. And then you start learning about that, I have to become knowledgeable, otherwise I will not survive. I will not be able to compete or go higher in life. So I will strongly suggest you to be open towards life and life's experiences and knowledge of life about different countries, cultures. Kabhi waste nahi jayega knowledge. Keep learning. Any other questions, guys? तो बात आ रही है। जी आ रही है, थोड़ा सा और तो करीब। मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं सही हो। You can type in the chat, please. अगर मैं बता दूं तो वो ज्यादा सही नहीं रहेगा। फिर आपको आवाज आ रही है। जी बोलिए। सर हम लोग टाइम मैनेज कैसे करें, ये मेरा क्वेश्चन था कि हमारे पास 8 to 16 तो हमारी यूनी होती है। अब मैं यूनी के बाद उस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अपने यूनी के बाद अपनी वेलबींग का ख्याल कैसे रखूं, न्यू स्किल्स कैसे लर्न करूं, एंड स्टिल स्लीप, प्रे एंड अदर थिंग्स। इतना टाइम ही नहीं होता कि हम लोग ये सारी चीजें कर ठीक सकते। है, मैंने बिल्कुल। लास्ट वीक schedule बनाया हुआ था अपना। I made the schedule on Friday and I हम्म, followed it on Saturday and Sunday. Weekends was fine. But as soon as Monday started, मेरा Monday का जो भी schedule था एक और completely ruined। कोई new चीज आ गई, then I procrastinated and motivation मैंने lose कर दी कि भी अब हो ही नहीं रहा था, मैं क्या कर सकता। हम्म, Monday went by, Tuesday, Wednesday and I got nothing done। तो हम्म, इतना ज्यादा फिर मैं उसे हो गया कि भी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या बनेगा। बिल्कुल, पर बिल्कुल। बहुत सारे डिप्रेशन सो देखिए, तो आपने, कंट्रोल कैसे। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और व्हेन आई एम कोचिंग दिस क्वेश्चन गेट्स आस्क्ड अ लॉट। सो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या चीज है? प्रोक्रेस्टिनेशन ये चीज है कि यू बिकम ओवरवेल्म्ड। आप ओवरवेल्म क्यों होते हैं? क्योंकि देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, कि आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी स्टार्ट कर लूं वो फिनिश नहीं कर सकता मैं। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग? सो दैट्स कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो सबसे पहले तो आपको ये देखना है ऑनेस्टली कि आप जो दिन गुजार रहे हैं उसमें आप कितना टाइम अपने फोन को दे रहे हैं, और कितना टाइम आप इधर उधर की चीजों को दे रहे हैं, ठीक है? और कितना टाइम आप एक्चुअली स्टडीज को दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लेक्चर में बैठे हैं और आपका दिमाग कहीं और है, और जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेक्चर में वो भी आप लर्न नहीं सही से कर पा रहे, या अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या यार यू आर नॉट बीइंग एबल टू आस्क द राइट क्वेश्चन एट द राइट टाइम टू योर टीचर, then you are wasting that time. You're not actually learning anything. So जो भी टाइम है आप जो actually आप 8 to 6 is a long time in university. Honestly, in my times in the schools and college, I didn't need to take tuition, because स्कूल के अंदर ही कोशिश होती थी कि जितनी लर्निंग ज्यादा से ज्यादा की जाए वो स्कूल के अंदर की जाए या कॉलेज के अंदर की जाए। और यूके के अंदर भी बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता, बिकॉज द एक्चुअल लर्निंग हैपन्स इन दैट टाइम। सो फर्स्ट आई विल से प्रायोरिटाइज द लर्निंग इन द एक्चुअल लर्निंग टाइम, ताकि आपको बाद में जाके ज्यादा हार्ड रिवाइज ना करना पड़े। ठीक है, असाइनमेंट्स होती हैं, आई एग्री, बट देन सिट डाउन विद योर फ्रेंड्स एंड try to complete assignments with collaboration. Like I said, network with people, learn from their experiences. So you can do that. और जैसा कि मैंने कहा, पर्पस आपका क्या है? आपकी पर्पस अभी स्टडीज है।
क्योंकि you are studying, you're invested a lot on your studies. So इस situation में डेफिनेटली आपको अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बीच में ब्रेक्स आएंगी, आपको हॉलीडेज आएंगी. इन दोज ब्रेक्स यू कैन क्रिएट अ 1 month प्लान, फॉर एग्जाम्पल, or 2 months plan of transformation, physical transformation. You can go to the gym, or you can start running, or you can start having intermittent fasting to reduce weight and become fitter. So you can plan these things. जिंदगी में देखें, एक साल के अंदर कई सीजन्स आते हैं. So I'm not saying do everything every day. Try to balance these things across the week, across the month, or at least in a year, so that you keep up to date. और जहां तक बात आती है मेडिटेशन की, तो जस्ट नमाज इतना टाइम नहीं लेती. आई थिंक अगर हम कहें कि फर्ज नमाज पढ़ने में और सुनते पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, दैट विल बी अ लाई. हम इससे ज्यादा वक्त और चीजों में स्पेंड कर देते हैं. सो अगेन, मेडिटेशन की जहां बात आती है, वो आपकी नमाज कवर कर रही है. नमाज इज अ काइंड ऑफ अ फिजिकल एक्सरसाइज एज वेल. सो उसमें भी आपकी एक्सरसाइज हो रही है. सो just following your religion, you are covering some aspects of life, your mental health, your physical well-being, just by offering prayers. So you're okay. Don't worry, you're not losing out on much. But with small changes in different parts of the year or months, you can remain balanced and keep growing. Just don't stop. That's all I'm saying. Just keep getting better. Okay, so how to develop confidence? Right, learn to fail. I know you're not expecting this answer, but this is the answer. Learn to fail. So when you start riding a bicycle, और पहली दफा आप चलाने की कोशिश करते हैं, आप गिर जाते हैं, और अगर आपके इर्द गिर्द दोस्त खड़े हुए हैं और वो हंस रहे हैं आपके ऊपर, सो डोंट लेट इट पुट यू ऑफ. क्या हो गया अगर आप गिर गए? दोबारा शुरू हो. देखिए, सक्सेस इज इक्वल टू परसिवेरेंस. अभी पाकिस्तान के एक लीडर है, शायद उनसे आपने सीखा हो कि सक्सेस इज इक्वल टू परसिवेरेंस. जितनी बार आप कोई चीज ट्राई करते हैं, थॉमस एडिसन ने आई थिंक 100 अटेम्प्ट्स की थी, या शायद इससे भी ज्यादा, and 99 of them were failed attempts, and then one was successful. That's all he needed to change the world. ठीक है, स्टीव जॉब्स ने भी बहुत फेलियर्स फेस किए हैं, इलॉन मस्क ने भी बहुत फेलियर्स फेस किए हैं. I was listening to the owner of Amazon, Jeff Bezos. He said he faced a lot of failures. A lot of his other startups failed, but only one of them succeeded, which was Amazon. So there will always be more failures than successes in life. I guarantee you that. In fact, the more failures you have, the more chances you have of becoming successful. Why? Because through failure, you have personally learned what not to do ever again. So stop being worry about being embarrassed in front of people. ठीक है? Don't worry. कोई कहता है कहने दो, आपके इंग्लिश एक्सेंट पे कोई बात करता है करने दो, लेकिन आप स्टेडफास्ट रहो, कॉन्फिडेंट रहो. आप इस बात के रजनीकांत को देख लो यार. ही इज एन इंडियन एक्टर, and I can't say that he's a very, very, very handsome individual, but look at how confident he is. Look at how successful he is. I mean, can you even compare any other actor in the industry with him? You can't, because he has learned that it's okay to be embarrassed, but remain confident. So remain confident at anything, at any cost, even embarrassment, because that's how you're going to learn. So अपने अंदर की जो खौफ है, इस हवाले से उसको दूर करो. हमारे अंदर खौफ बहुत ज्यादा है. बचपन से हम लोगों को खौफ डाले जाते हैं, हमारे पेरेंट्स डालते हैं, हमारा माशरा डालता है, ये मत करो, वो मत करो, ये करोगे तो ये नुकसान हो जाएगा. काम शुरू करने से पहले ही खौफ डाल दिए जाते हैं. जब मैं यूनिवर्सिटी में था, मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा था आज से 20 साल पहले कि थ्रू फोनेटिक्स, through breaking down Nusrat Fateh Ali Khan's songs, we can regenerate his songs. We can make him sing new songs even after his death. That was AI. 20 years ago, I had this idea. Shehzad, your head of department, was with me, and he can vouch for that. We thought of AI, conversational AI, 20 years ago in Pakistan, and it was shot down.
It's impossible. But now it's happening. People are doing it. They are recreating the voice of dead people. So, don't stop dreaming. Your only limitation is the amount of dreams you see, the goals you set, and your fear of failure. These are the only limitations. Once you will remove them, there is nothing stopping you. Because even if you fail once, you can try again. If you fail, try again. Fail, try again. Keep trying until you will succeed. And I promise you, you will succeed. There is no reason why you will not. As long as you are alive, you can keep trying and you will succeed.